Dear viewers, Assalamu alaikum. Today I'm here with a report on the reopening of schools and longer term strategies for schools to implement will become the need of the hour. As you know, in the wake of COVID-19, there is a schedule by the government, as the government has already announced that schools will reopen on 15th July 2020. Now I have read different articles and different strategies planned by the government in order to facilitate this reopening of schools and educational institutions all over Pakistan. In Pakistan, terming coronavirus cases as serious and the number of cases, according to the recent report, have crossed 57,000. The government announced the closure of all private and government educational institutions in Pakistan till 15 July 2020. The percentage of the patients who have fully recovered have increased to 30%. The preventive measures have been adopted for the safety and security of the children by means of raising a slogan, "Stay home, stay safe." This is the situation that we had never faced before. It is a bitter reality that children always lose being out of school what they had learned at school. It particularly affects low-income students and students with special needs. The existing situation of being out of school for a long period is going to exacerbate the situation. Although the schools have arranged online teaching techniques, but this program has not proved as much successful as face-to-face classroom teaching and learning process. According to the estimate, the education of over 1.5 billion students worldwide has been disrupted. And the situation in Pakistan has become more vulnerable in this regard. However, around the globe, schools are now slowly gearing up to reopen and resume activities. In Pakistan, both schools and parents are anxious too about the reopening of educational institutions. There are serious challenges faced by our country. Now, what are the challenges that is faced by the country regarding reopening of the school? The first part of a national challenge is to not only prepare our schools for reopening to the best of our abilities, but to also comprehend why schools resuming education is important for a country like ours. Education should not be disrupted, but rather enhanced in the wake of these times because Pakistan already has a high primary and secondary school dropout rate. And surveys indicate that if education is disrupted, it may become 5 times more likely that children will not go back to school. This in itself is problematic, as young adults and children contribute largely to our demographic and lie in the pyramid of productivity. Educational institutions, no doubt, contribute a lot in the personality making of the children, as children more likely copy their teachers in their behaviors and listen to their teachers' advices mostly. Their routine of going to school regularly and doing every work on time is very useful for them. While during these quarantine days, their personalities have been distorted due to irregularities in their habits. The schools offer not just education, but a safe haven for emotional, mental, and cognitive development. Children that are enrolled in schools which cater to these needs can receive health care, counseling, and support from their institutions.
If the gap becomes too wide for children to receive these essential services, the complications arising from that could get too big and too difficult to address in an efficient manner. जो बच्चे जो स्कूल में सीखते हैं, फेस टू फेस उनकी लर्निंग होती है स्कूल में, जो वो टीचर से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस लेते हैं, उन पे जो टीचर की पर्सनालिटी का, उसकी टीचिंग का जो डायरेक्ट इफेक्ट बच्चों पे होता है, उनके माइंड पे, दैट इज मोर इफेक्टिव। वो ज्यादा पुर असर होता है बजाय इसके कि घर में उनकी उनकी हैबिट फॉर्मेशन घर में इतनी अच्छी नहीं हो सकती जितना कि स्कूल में होती है, कि उनकी हैबिट्स के अंदर, उनकी आदत के अंदर एक बाकायदगी का अंसर शामिल होता है। और बच्चों की जो ज़हनी नशोनुमा है, उनकी जो फीलिंग्स, उनके एहसासात की जो ग्रोथ है, वो स्कूल में एजुकेशन के ज़रिए, स्कूल एजुकेशन के ज़रिए बहुत बेहतरीन तरीके से मुमकिन हो सकती है। Last challenge which came to my mind was that the most important factor, however, still remains that not all children in Pakistan can get advantage of online teaching and learning process. Since 63% of our population resides in the rural setting and only 28% have access to the internet for such facilities, this method has not proved useful in such testing times. अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ पे नेटवर्क का इशू है, इतने ज़्यादा एडवांस्ड लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस हमारे मुल्क में मुतारिफ नहीं कराया गया अब तक। 63% पॉपुलेशन तो अभी देहातों में रहती है या फार फ्लंग एरियाज में रह रही है, जहाँ पे इंटरनेट की सहूलियात मौजूद नहीं है। वहाँ पे बच्चों को टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस नहीं उनको कन्वे किया जा सक रहा, उनके असातिज़ा उन तक नहीं पहुंच सक रहे, तो इसलिए वो विदाउट एजुकेशन आजकल वो अपने घरों में बंद हैं। Now there is a K12 plan I must introduce to all of you. The Ministry of Federal Education and Professional Training has issued its Pakistan National Education Response and Resilience Plan K12 for COVID-19, which is a guidance for schools on how to mitigate and prepare for reopening. हमारी गवर्नमेंट ने एक प्लान तैयार किया है कि कैसे स्कूल्स को तैयार किया जाए कि वो दोबारा से इन स्कूल्स को खोला जा सके और बच्चे बाकायदगी से अपनी क्लासेस अटेंड कर सकें। However, some safety measures have been planned by the health experts to help the educational institutions in this regard. कुछ health experts ने अपनी राय दी है इस मामले में कि कैसे तालीमी इदारों को गाइड किया जा सके, उनकी रहनुमाई की जा सके कि किस तरह से वो कुछ सेफ्टी, कुछ हिफाजती इक़दामात कुछ ऐसे कर लें ताकि बच्चों की हिफाजत भी हो सके, उनकी हेल्थ की प्रोटेक्शन भी हो सके और वो बाकायदगी से अपनी तालीम हासिल करने स्कूल जा सकें। So the policy becomes easier to implement once it is divided into a number of practical steps that schools can employ by planning and preparing before reopening. ताकि दोबारा स्कूल खुलने से पहले स्कूल्स अपने हिफाजती इक़दामात कर लें। So the first step in preparation involves sanitation, hygiene and physical distancing measures which can be taken by schools. सबसे पहले सफाई का खास इंतजाम स्कूल्स ने करना है। डिस्टेंसिंग मेजर्स, फिजिकल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना है, उसको यकीनी बनाना है कि बच्चों का एक कंसिडरेबल फासला मौजूद हो, which can be taken by schools. The summary of these steps are, I have prepared a summary of these steps which have been approved by the government and planned by the health department. Now, sanitizers,
Wash basins and closed dust bins must be provided in every school. Disinfect school before the return of students. स्टूडेंट्स की वापसी से पहले पहले स्कूल्स की को मुकम्मल तौर पे जरासीम से पाक किया जाए. Make arrangements for classes to maintain physical distance of at least 1 meter between students. Seating arrangement ऐसी की जाए क्लास के अंदर कि बच्चों के दरमियान कम से कम 1 मीटर का फासला जरूर हो. Equip school with infrared thermometers and employing school nurses or trained faculty members to use it for daily temperature checks of persons entering school premises. कुछ ऐसा इंतजामात की या तो कोई एक नर्स हायर की जाए या स्कूल के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं स्टाफ हैं उनमें से ट्रेन किया जाए कि वो बच्चों के टेम्परेचर या हर आने जाने जो विजिटर्स हैं उनके टेम्परेचर को चेक करें. Consider phased return of students to school. On a school day, the most important step is how to enable children to enter the school without affecting distancing protocols. हर रोज एक खास कदम उठाया जाए इस सिलसिले में कि कैसे बच्चों का एक दूसरे के दरमियान फासला रखा जा सकता है. Decrease huddling of parents and students outside school at drop off and pickup time. जब स्कूल आने और जाने के टाइमिंग्स में पेरेंट्स का या स्टूडेंट्स का स्कूल के बाहर झमघटा जो है उसको कम किया जाएगा. टेम्परेचर चेक्स हैंड एंड शू सैनिटाइजिंग शुड बी प्रैक्टिस बिफोर एंटरिंग द स्कूल. स्कूल में दाखिल होने से पहले बच्चों के टेम्परेचर चेक किया जाएगा. उनके हाथ और शूज को सैनिटाइज किया जाएगा. encourage hand washing and multiple times during the day. बच्चों को ये encourage किया जाएगा, उनको instruct किया जाएगा कि वो काफी टाइम अपने हाथ दिन में कई मर्तबा अपने हाथों को धोएं. लिमिट ग्रुप गैदरिंग सच एज असेंबली एंड रिसेस. असेंबली और रिसेस के दौरान ब्रेक के दौरान ग्रुप गैदरिंग को खत्म किया जाएगा. मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन अमंग स्टूडेंट्स एंड स्टाफ. And how can we do it? Like staff and students should wear face masks as recommended. उनको face mask जरूर पहनना चाहिए. Then implement a plastic coupon based system for canteen food purchase. If canteens are opened, then plastic coupon based system must be ensured there. Encourage healthy eating and exercise routines, but avoid contact sports. Although healthy eating and exercises should be introduced, but sports should be avoided during that school time. Risk, stratify and address mental health issues in staff and students returning to school. Pay attention to health and well-being of teachers as well, because health of students and teachers both are health of these both is very essential. Then following the protocols for community transmission is also essential. Like send any student or school staff developing symptoms of COVID-19 home. जिस बच्चे के अंदर कुछ symptoms दिखाई दें पाए जाएं उनको फौरन घर भिजवा दिया जाए and inform the government and helpline number 1166. Then exposed or symptomatic students should be dismissed for at least 5 days. बच्चे में जिस बच्चे में सिम्टम्स पाए जाएं कुछ अलामात ऐसी नजर आए उनको एटलीस्ट 5 डेज के लिए घर भेज दिया जाए. एंड स्टूडेंट्स हु टेस्ट पॉजिटिव देयर क्लास ग्रुप शुड बी डिसमिस्ड फॉर एटलीस्ट 14 डेज. और जिन स्टूडेंट्स के अंदर खुदा न खास्ता ये पॉजिटिव आ जाए तो उस पूरी क्लास को 14 डेज के लिए घर भेज दिया जाए, घर में बिठा दिया जाए. The school nurse or assigned faculty member should liaise with the government's health authorities. स्कूल नर्स और जो फैकल्टी मेंबर हैं जिनको इस काम के लिए असाइन किया गया है, ये जिम्मेदारी दी गई है ये जो हिफाजती इक़दामात उठाने की, उनको चाहिए कि वो गवर्नमेंट की जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ उनका आपस में लिंक होना चाहिए, उनका आपस में बातचीत होनी चाहिए. Establish a no tolerance policy for parents and students who don't follow recommendations of cloth mask, hand washing, sanitizing and physical distancing. सख्ती से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को इस बात पे अमल दरामद करवाना है कि वो मास्क क्लॉथ कपड़े के बने हुए मास्क पहनेंगे, बच्चे भी और पेरेंट्स भी. हैंड वॉशिंग को यकीनी बनाना है. सैनिटाइजिंग एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाना है. बच्चों के दरमियान जिस्मानी फासला बहुत ज़रूरी है.
then longer term strategies for schools to implement will become the need of the hour as the situation changes, and the recommended global strategy is to consider a school health program which would include regular health screening for students and extended medical support for students, parents and faculty through an on campus school nurse. नाउ ही सेज दैट जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, वक्त का ये मुतालबा है कि स्कूल्स इन चीज़ों को, इन मेजर्स को अडॉप्ट करेंगे, इन हिफाजती इकदामात को ज़रूर अपनाएंगे और फिर उनके स्टूडेंट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत वसी मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. A solution to such a novel problem can never exist without its challenges. Definitely, where there are challenges, there are solutions as well. Both go side by side. जहाँ पे solution होंगे, definitely challenges भी होंगे. Yes, these steps, if taken by schools, will ensure a relative measure of safety towards the final outcome of this pandemic. और ये steps schools ही यकीनी बनाएंगे, इन तमाम इकदामात को स्कूल्स यकीनी बनाएंगे ताकि इस पेंडेमिक, इस वबा का कोई फाइनल, कोई हतमी नतीजा सामने आ सके. With this, I thank you. My dear viewers, one thing more at the end is that I need your kind opinion whether my this style of sharing my views or giving lectures on PowerPoint is more effective, or when I describe or explain it on board by writing with marker is more effective to you. Kindly write in your comments whether I should deliver my lectures in future on PowerPoint or I should explain it on whiteboard by writing with my hand. I thank you all. Please आप मुझे बता दीजिएगा कि मेरे जो पावर पॉइंट पे ये वीडियो बनी है ये ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा इंप्रेसिव है, इसकी ज्यादा क्लियर समझ आ सकती है, या व्हेन आई राइट इट ऑन बोर्ड, जब मैं लिखती हूँ अपने हाथ से व्हाइट बोर्ड पे, वो ज्यादा इफेक्टिव नजर आता है. ये जरूर मुझे बताइएगा. प्लीज लाइक, कमेंट, share and subscribe it once you have watched this video, please. Thanks for watching this video.